वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे ईरान इश्यूज़ पर। इधर बीच कुछ समय से आप देख रहे होंगे मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ते बढ़ते हुए देखा आपने। और विशेषकर आपने देखा होगा कि इज़राइल, हमास, जिसको फ़लस्तीन वार को लेकर पूरे दुनिया में इज़राइल का कुछ देशों ने विरोध भी थी, कुछ देशों ने विरोध किया तो कुछ देशों ने उसका सपोर्ट भी किया। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने खुलकर इस फ़लस्तीन का विरोध किया कि जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो दिस ऑल थिंग्स विच आर हैपनिंग every issues, there was two aspects. There was pros and cons, and even so many reporters, when they are reporting there, they told that there is no water there, because these all things which was happening, that was catastrophic situation was going on, that even many journalists, they went there, they see the all things which was happening there, that was unbearable. uh, इसके अलावा in spite of that, so many journalists are killed there, but America was supporting Israel. In that situation, everyone is saying that Iran is supporting Hamas and Palestine. Actually, you have seen that proxy wars was going for a long time in the Middle East. Once upon a time, जब आपने देखा होगा कि ईरान एक समय और ईरान के बीच में जब 80 और 88 के बीच में काफ़ी देयर वाज वार बिटवीन इराक एंड ईरान. What happened was that time? In that time, Russia was supporting to Iran and Iraq, but in that situation, it was hidden. But America was supporting to Iraq. But thing was that सीज़ फायर जैसे ही 88 में होता है, तो उसके बाद से सिचुएशन वहाँ लगातार बढ़ती ही जा रही है, वहाँ तनाव बढ़ते जा रहे हैं और तनाव बढ़ती गई। हर कोई अपने पोजीशन को लेकर, अपने पद को लेकर, हर कोई एक दूसरे पर डोमिनेंट होना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये मंशा आज से नहीं, ये पुराने समय से आ रही है। और इसी डोमिनेंसी को बनाए रखने के लिए कुछ देश हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, सुपीरियर मानते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, कुछ के पास एटम बॉम्ब है जिसके आधार पर वो दूसरे देश को बार बार धमकाते रहते हैं। आप लगातार यूरोप में भी देख रहे होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़, यूक्रेन और रशिया वार वाज गोइंग ऑन इन, वहाँ भी आपने देखा होगा विच वॉज हैपनिंग, सो मैनी पीपल्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस. These all things, nobody will support that it is happening, okay, it is fine. Just like that, Palestine situation, if you see the very micro level study, a very minute thing is that these all things was happening by air, bombarding by air, infantry battalion. इवन इज़राइल ने अपने पूरी ताकत के साथ लड़ाई की, इसके बावजूद भी उसे जो वो चाहता था, बस हाँ ये है कि उसने पूरे
हमास को, पूरे फ़लस्तीन को बर्बाद तो कर दिया, उनके घरों को, लाखों हज़ारों की संख्या में बच्चे मारे गए, वहाँ औरतें मारी गई, वुमेन्स आर किल्ड, चिल्ड्रंस आर किल्ड, इवन they are saying that Hamas terrorists are killed, बट इन अपोज में आप देखेंगे कि हमास क्या एक एक बदले की भावना, ये लंबे समय से चल रही थी कि उनका ये कहना था कि हमारे भाइयों को, बहनों को, हमास, हमारे फ़लस्तीन के भाइयों को, दे आर टेकिंग द बदले की भावना, दिस ऑल थिंग्स वाज हैपनिंग। वो बंदी बना के रख रहे थे, बंधक बना के रख रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे, जब जिस तरह से उन्हें मन करता था वो हमें अटैक करते थे। उसी की भावना को लेकर इन्हें सारे आक्रोशित हुए। अभी आपने देखा होगा कि तेल अवीव में तमाम ऐसी जगह जहाँ हॉस्पिटल्स में, बट और अपने हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने मैनिपुलेट किया। कई सारे जो चैनल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, they are trying a lot, but finally what was happening, world has seen, middle countries, Asian countries, many continent, they have seen what was happening due to this. These all are the effects of social media. People's in power today, people and countries are empowering, and these all things, see, आप देखेंगे कि people and countries saw that America was blaming and Israel was blaming. These all things was happening for a long time. War was going due to Iran, Hamas, Hezbollah, Palestini people have a good support of, but finally what was happened? If you compare Israel and Hamas, there is a very far difference between these and this. They are more capable, they are more strong, but Palestinian peoples are not more strong. मतलब you cannot, if you are comparing with them, it means that you are not knowing the facts. These all things was happening, but some days before you have seen in the UNO, and some countries are saying that let us stop war. This is against of anti-humanity, because people and all countries and all foreigners, delegates, they have seen the situation in Hamas, how the people are staying there, how the, even Elon Musk says that we are producing and we are preparing Hamas in, and millions of and lakhs of people we are producing. These all things was happening and we are taking बदले की भावना, वी कैन से दैट। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो उनके एम्बेसी पर हमला हुआ ईरान के, और इज़राइल का कहना है कि ये हमला जो है, अटैक हुआ है, ये हमला करवाया गया है इज़राइल के माध्यम से, जिसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कहते हैं कि अमेरिका को इज़राइल के मुद्दे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इसका हम बदला लेंगे। सुलेमान की हत्या अमेरिका ने करवाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ईरान में एक पहले और अब में एक बदलाव ये आया है
कि पेशेंस बहुत आ गया है और लगातार इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से उन्होंने देखा। ईरान के लोगों ने युद्ध को बहुत करीब से देखा है, समझा है नुकसान क्या है, और चीज़ें लगातार अब तो ट्रांसपेरेंसी होते जा रही है, चूँकि सबके पास सोचने समझने लोगों में सोशल मीडिया का अवेयरनेस हो गया है और हमारी ज़रूरतें भी एक तरह से सोशल मीडिया की बनती जा रही है। मतलब इट इज़ इंडिस्पेंसिबल इन आवर डेली लाइफ्स। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कोई लगातार एक युद्ध ख़त्म हो रहा है, दूसरी युद्ध स्टार्ट हो जा रही है। अफ़गानिस्तान हमने देखा, इराक देखा आपने, और इसमें जियो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा भूमिका अमेरिका की होती है। चूँकि आपने अमेरिका का देखेंगे, कभी ताइवान में, कभी फिलीपींस में, कभी अमेरिका में, कभी साउथ कोरिया से हमेशा टकराव होते रहता है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी। इसलिए हो रही है कि हमें जियो पॉलिटिक्स में डोमिनेंट होना है। डोनाल्ड ट्रंप आए, उनके समय भी आपने देखा, अभी रसिया में नवेल्नी की डेथ हुई अंडर द कस्टोडियल when he was in prison, and people are saying that he is more popular in, and he was talking against of Putin. There is no democratic system. Navalny groups and Navalny supporters are saying Putin have a good courage. He was against of policy of Donald Trump and Biden Trump, and वो आपने नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, यूक्रेन लेना चाहता था, जिसके वजह से ही वाज अपोजिंग दिस ऑल थिंग्स वाज हैपनिंग एंड दैट मे बी मोर टेंस, but he was giving more and trying to convince to Ukraine, but he was not convincing. That's why ईरान में भी वही चीज़ें हो रही है, और आप देखेंगे कि फाइनली पुतिन रिटालिएट to Ukraine when these all things was not going to sort out. I mean to say that why these all things are happening, what was going on. Even so many delegates are happened in UNO, but there was no solution right now. What is going to happen in the Palestine? There are so many organizations you have heard, peace and court, international court of justice. But what was the why it was injustice of anti-humanity, human being? Peoples are saying that जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं अमेरिका का सा है। यह सच्चाई है, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपने चीज़ों को, हम कब पूरी दुनिया या जिस देश में लोग रह रहे हैं उसके जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर कोई somebody wanted to destroy the democratic system, it means that this is against of society, it is against of family, it is against of sociology. Somebody wanted to hijack the psychology of anybody, which is not the good for any humanity. For example, somebody wanted to hijack my mind on what I am thinking, what I want. Other is not going to decide. If I
think very freedom, it is my liberty. You just like that, in geopolitics, what was happening in entire the world, who will decide? Country people will decide. The countries, जिस देश के लोग हैं, the people who are staying that country, they will decide. Their system will decide, their judiciary will decide, their democratic system will decide. But America, continuously you have seen in every, there is more interference in many countries. This I think it is against of humanity and against of democratic system. If system is not run by, you can give, you can help, you can give the suggestions, but you are trying to manipulate and trying to give your own system, and you are trying, you are doing different things. For example, you have seen in the Pakistan, you have seen the India, you have seen in the China. If there is a tense between two countries, he was taking the good, he was taking the interest. This is geo interest. But for some days and for some years and for a long time, what is happening? I think that if you see the American policy which was happening all over the world, this is not the, you can say that it is very excellent, it is very magnificent, which was happened, which was done by American government, American systems. They are developed according to their development. They are trying to manipulate, and they trying to dominate to other third world countries and underdeveloping countries. They are, in the name of help, they try to manipulate, and they try to dominate. Finally, let him decide. Now, why you are you deciding how they live? For example, in new world information and communication order, what was happening? These all things was happening in the Vietnam War. What have you seen that there was a time when Britishers was fighting there. Finally, he wanted to give the lead, he wanted to win, and communication was, there was more imbalance of communication. There was not the equality there. He wanted to propagate different things, but but reality is different, and propagating different things. People don't have information, the factual, what people will understand. If you propagate different things, in Afghanistan war, there was embedded journalism concepts which was initiated by Americans. But the thing is that if you take some journalist and you dedicate some particular army, and you are saying that report the reality and what was happened, how can you believe that what was happening? If a journalist is very have a freedom, so these all things which is happening, it is not a democratic system. We must take it very seriously. World should think about these all things. This I take it very serious concern, and they must take it very as a matter of thought about it, as a matter of concern. और इन सब मुद्दों पर बात होना चाहिए। ऐसे अगर पूरी दुनिया अगर ऐसे ही अगर रहेगी, तो हम कैसे किसी से जस्टिस, न्याय,
अगर सिर्फ डिस्पैरिटी होती रहेगी, इनजस्टिस होता रहेगा, तो कोई देश हर किसी से एक दूसरे से तनाव होगा, अशांति नहीं होगी। ऐसे ही लोग पूरी दुनिया में अशांति देख रहे हैं, सामाजिक संतुलन में लगातार बिगड़ती हालत को देखते रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कई तरह के तनाव है, इसके बावजूद भी हमें वी मस्ट थिंक अबाउट दिस ऑल थिंग्स। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर watching me.